So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the Hindu analysis of 23rd August. So I hope you all are aware that actually every day at 8 p.m. we are having the Hindu analysis, which is generally taken by Govind sir. So but in today's class, I'll be taking, okay, because on Saturday I take the class. So let us begin with today's class. So am I audible, visible? Is everything fine? If yes, then please write yes. Yes, today is 23rd August and let us begin with today's class. Now I have one question. Please tell me, recently a former president of a neighboring country has been arrested. Which is that country? Please tell me in the comments. A former president of a neighboring country. I am waiting for the response. And if you tell me the name of the person, I'll be very happy to know. Yes, Ansh Dayal, you are right. Sri Lanka. Kartikya, you are also right. Name of the person. Yes, Adrija, you are also right. Name the person. उस आदमी का नाम बताइए. Former president. Ranil Wickremesinghe. Right, Kartikya. Very good. Huh? So let us begin. Actually, this is actually we'll be discussing on the first page. Here is the news on the rightmost portion of the newspaper. We'll be discussing about SIR. So basically, I have decided to schedule a class on Tuesday at 3 p.m. regarding SIR. Because it is coming so much in the news that I think I need to now discuss it. मैंने सोचा कि ठीक है हो जाएगा, फिर मेरे को लगा कि नहीं इतना ज्यादा न्यूज में आ रहा है कि डिस्कस करना पड़ेगा. ठीक है. And then we'll discuss about the Supreme Court's order of stray dogs. So first, help Election Commission bring back Bihar voters left out of rolls, says Supreme Court to the parties. So basically, the Supreme Court has said, see, recently what happened was Election Commission has conducted SIR. We will discuss in detail in the Tuesday's class. And many people are actually left out. So people have filed a petition that, you know, you are like a lot of documents are being asked. We do not have those documents, etc., etc. So the Supreme Court judge, Justice Suryakant, said that political parties should be helping in getting people added in electoral rolls, etc. That is what he had said. Okay. Can you please tell me who is going to be the next Chief Justice of India? When Justice B.R. Gavai retires, I think in November he will retire. Anyone? कहा जाता है ना नकल के लिए अकल चाहिए. वही वाली बात होगी. Please tell me. Yes, his name and photo is in front of you. Justice Suryakant will be the next CJI. Yes. Okay. Yes, Kartik, very good. Huh? That is what you should be knowing about. We are surprised why the parties are not doing anything. Why is there a distance between people and the local political workers? That is what you should be knowing about. Sanjeev Khanna retired in May. Before Justice B.R. Gavai, Sanjeev Khanna was there. Okay. Okay. Now, एक और order again. Apex Court. What is Apex Court? Apex Court किसको कहते हैं? एपेक्स पता होता है टॉप में जो कोई चीज, जैसे प्लांट्स के लिए एक टर्म यूज किया था जिससे टॉप वाला हिस्सा को एपेक्स कहते हैं. सुना है? वो एक टिश्यू भी होता है, एपिकल टिश्यू और समथिंग लाइक दैट. सो एपेक्स कोर्ट मींस सुप्रीम कोर्ट, द टॉप मोस्ट कोर्ट. ठीक है. यस. सो मॉडिफाइज हार्श ऑर्डर, कोर्ट में लिखा है हॉर्श, allows release of stray dogs. Actually what happened was, I'm sure you must be aware, few days back a Supreme Court passed an order on August 2025. Justice J.B. Pardiwala and Justice Mahadevan had directed the Municipal Corporation of Delhi and other civic authorities to round up all stray dogs within 8 weeks and keep them in dedicated shelters with no release onto the streets. मतलब ये था कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं सबको उठाइए, सारे को 8 हफ्ते के अंदर, और सारे को डेडिकेटेड शेल्टर में डाल दीजिए. एक भी रोड पर नहीं दिखना चाहिए. Authorities have also been instructed to establish shelters with the capacity to house at least 5,000 stray dogs within 8 weeks. So आपको शेल्टर बनाना है जिसमें एक में 5,000 कम से कम होने चाहिए और 8 वीक्स के अंदर सब कुछ कर लेना है. So that was an order.
So after that, many people started protesting and many things happened. I'm sure you must be aware of that. Later on, some other bench, the other 3-judge bench. So basically, it's a 2-judge bench order. And the 3-judge bench clarified that stray dogs may now be released back into their original habitation after being dewormed and vaccinated. मतलब उसको वैक्सीन या दवा वगैरह लगा करके उसको वापस रिलीज कर दिया जाए. Okay, the dogs once deformed and vaccinated shall be returned on the same area. However, the canines exhibiting aggressive behavior. यहाँ पे canines यानी canines दांत होता है, but here it is referring to dogs. Or infected with rabies shall not be released into the public. यानी ऐसे dogs जो कि बहुत ज्यादा aggressive behavior होता है ना, कोई कोई बहुत ज्यादा ये कहते हैं dangerous type का होता है, उसको नहीं रिलीज करना है, या जो बीमारी रेबीज से इन्फेक्टेड है उनको नहीं रिलीज करना है. Okay, so they have actually modified the order because a lot of protest actually happened once this 11th August judgment was passed. Take a lot of debates happened. Many people supported the judgment, many people opposed it. Okay, we are not going in that detail, but I'm sure you have got the concept clear. Yes, and there are some animal rights activists. I'm sure you must have heard about Maneka Gandhi ji. She is actually the wife of Mr. Sanjay Gandhi, who was the son of Indira Gandhi ji. So Maneka Gandhi ji is actually a very famous animal rights activist. Okay, and there is an organization, I'm sure you must have heard, PETA, People of Ethical Treatment to Animal. This is actually an NGO which is very active in filing petitions and or regarding animal rights, etc. Okay, now I have one more question. The question is, where do you find Animal Welfare Board? Where is its headquarters? I'm expecting everyone to answer. Yes, Kartikeya, you're right. Ballabgarh in Haryana. So those who are living in Delhi NCR, they know. And it's actually in Faridabad. But originally it was in Chennai. So when it was established, the headquarters was originally in Chennai. Now it is in Ballabgarh. Is it a statutory body, constitutional body? Neither statutory nor constitutional. क्या होगा ये? कहां पर आएगा ये? Why I'm discussing, कुछ साल पहले there was a debate on Jallikattu. Okay, in Tamil Nadu there is a sports. Okay, something similar to bull racing type, something bull so that was also filed a petition in the Supreme Court few years back. It was very much in the news that this is violation of animal rights, and the opposite people said that no, this is our cultural rights. Okay. So at that time, Animal Welfare Board was also in the news. उस टाइम पर भी कई बार बातें हुई थी इसी Animal Welfare Board की. That's why now I am again talking about this, because we are talking about things related with animal. Statutory body, so formed under which law? If you are saying statutory body, then which law? Prevention of cruelty to animals. Very good, Kartikeya. Great. So basically, Animal Welfare Board is headquartered in Ballabgarh in Haryana, originally established in Chennai. Okay, and of course, it is a statutory body under Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. Okay, so याद रखिएगा, because again the same concepts or same ideas are very much in the news. Okay, let's move on. Yes, this is ex-Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe arrested. Okay, and he has been taken into custody after being questioned about a September 2023 visit to attend a ceremony for his wife at a university. So actually there are charges of misusing of state funds. So मतलब ये है कि government funds को misuse किया उन्होंने अपने personal use के लिए. Okay, so that is the allegation against him, for which he has been arrested, and he is actually very much in the news. Okay, let's move on to the editorial page. चलते हैं. A court order that was barking up the wrong tree.
Actually, barking up the wrong tree जो ना एक phrase होता है ना, I'm sure you must be aware. But here actually they are talking. He is also talking in context of actually what the dogs. And the judgment, Supreme Court judgment on dogs again, 11th August judgment, where to round up and incarcerate, मतलब एक तरह से जेल में डाल देने, या जेल में डाल देने टेक्निकली शायद सही वर्ड नहीं होगा, इनकारसरेट जनरली जेल में डालने भेजते हैं, बट यहाँ पर है कि आप उसको पकड़ करके ले जाओ, है ना. All street dogs in New Delhi, all, and was not just a misguided attempt to solve. He's saying that this was a wrong judgment. It was scientifically unsound, legally questionable, and morally bankrupt. So he's very harshly criticizing this judgment of Supreme Court 11th August judgment, that it is not scientifically possible, legally questionable also, and morally bankrupt in the sense that this is like immoral, or in the sense that it is quite harsh. That is what he says. While this misguided directive was stayed on 22nd August, its initial pronouncement revealed a dangerous willingness to ignore both scientific evidence and constitutional compassion. Means he is saying that constitution gives compassion. Compassion matlab sympathy plus the idea to help others, है ना? So the willingness to help others, to understand the pain of someone and to have the desire to help that person, है ना. तो यहाँ पे compassion towards dogs की बात हो रही है, of course, not human being. तो वो ये कह रहे हैं कि जो प्रीवियस जजमेंट था उसमें बहुत सारी चीज मिस कर गई थी, साइंटिफिक एविडेंस को मिस कर दिया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंपैशन है not only towards humans but also towards animals, that has been missed. Since the final hearing on the matter is still pending, it is imperative for citizenry to weigh their options, etc. तो ये सब बता रहे वो, ठीक है. Then the directive, which has sailed by someone as a stray dog menace, was in reality a blueprint for public health catastrophe. The very idea that mass shelters can work in a place in India is a dangerous fantasy. तो actually क्या हुआ कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि yes, बहुत सारे there are some incidents actually where stray dogs have bitten the people so badly that people have died. ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है ना, कि जहां पे स्ट्रे डॉग्स ने काट लिया और इंसान की डेथ हो गई, बच्चे की डेथ हो गई, या बुरी तरह घायल हो गया, समथिंग लाइक दैट. सो ही सेड कि अब लोग ये सोचे थे कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि 8 वीक्स के अंदर सारे स्ट्रे डॉग्स को प्रॉपरली शेल्टर्स में डाल दी जाए. बट व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव? अब इसको उलट के देखो. लेट्स टॉक अबाउट प्रिजन इन इंडिया. प्रिजन में तो ह्यूमंस को रखा जाता है, ठीक है, एंड यू गो एंड गूगल एंड सर्च इट, स्टेटस ऑफ प्रिजन इन इंडिया. Even the Supreme Court in its various judgments have said that there are places where there is more than 150% occupation. For example, if there is a jail where there are supposed to be 100 people, 150 people or even 200 people are there. तो जो इंसान को जो जेल में रखा जाता है वो तो प्रॉपरली है ही नहीं. कई जगह पे जहां पे 100 जगह होना चाहिए वहां 200 लोग हैं जेल में. प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज भी बहुत जगह नहीं है. इन टॉप क्लास जेल्स यू विल फाइंड, मतलब अच्छे सिटीज की जेल्स में हो सकता हो, लोअर क्वालिटी में वो भी नहीं है. सो द आइडिया इज इट पॉसिबल दैट in within 8 weeks all the stray dogs will be actually taken up and put inside a proper shelter, a dignified shelter? क्या ये 8 वीक के अंदर पूरा सारे स्ट्रे डॉग्स उठा के किया जा सकता है? तो इस पर क्वेश्चन था, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ वी सी द कंडीशन ऑफ जेल्स इन इंडिया which is for human being, even the Supreme Court has said at various places that the jails are actually lack infrastructure, they are overcrowded, and there is actually human rights violation happening. I mean, that is what the thing is. तो यही बात इन्होंने लिखी है यहाँ पर, ठीक है. So there are both aspects that is being talked about, है ना. So let us imagine lakhs of Delhi's free roaming territorial dogs suddenly captured and thrown together. The result would be brutal dog fights, injuries and mass casualties. These shelters costing thousands of crores to build. हाँ, पहली बात तो बहुत पैसा लगेगा, ठीक है. आप ले जाओगे सबको एक साथ डाल दोगे, कैसे करोगे? आपस में मतलब अटैक नहीं करने लगे. So there are a lot of issues. The idea is we cannot do this in 8 weeks. 8 weeks मतलब 2 months के अंदर सब हो जाए. So of course it is very difficult that it should be done properly in 2 months. And these shelters costing thousands of crores to build and maintain would inevitably become epicenter for zoonotic disease such as rabies. अब उन्होंने ये कहा, you understand what is zoonotic disease? Like even it is said that COVID was also a zoonotic disease. Any disease which can be transferred from humans to from animals to humans.
तो उन्होंने बताया कि अगर बहुत सारे डॉग्स एक साथ ले आ जाए, एक इन्फेक्टेड होगा सबको इन्फेक्ट कर देगा, बिकॉज कम स्पेस में होगा। ऐसे तो डॉग ओपन है ना, इन्फेक्शन उतना डेंजरस नहीं, लेकिन आप क्लोज रूम में ले आओगे तो आपस में बाकी डॉग्स में स्प्रेड हो जाएगा एंड इट विल इफेक्ट द पीपल, ह्यूमंस हु आर हैंडलिंग देम। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, पुअरली प्रेड अनप्रोटेक्टेड स्टाफ्स हैं, तो ऑफ कोर्स इतना कम टाइम में ये सारी चीज करना इतने बड़े लेवल पर। फिर अब बहुत सारे लोग डॉग्स जो डेथ करेंगे कैरकासेस, उसको कैसे हैंडल किया जाए? बिकॉज नाउ इफ यू हैव मेड अ शेल्टर फॉर डॉग्स, if the dogs dies, then how to handle it at one place? And बहुत सारी problems थी। The mass removal of dogs would create a vacuum, a phenomena, है ना, well documented in studies, है ना, dogs from neighboring states such as Haryana and UP would simply migrate to Delhi to fill the new। हाँ, ये भी हो सकता है, आपने कह दिया कि अच्छा जितने भी दिल्ली में डॉग्स सब हटा दीजिए, remove all the dogs, maybe the dogs who are from Haryana and UP will come ecological leash by moving, drawn by the same food sources, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज नो ऑफिशियल बॉर्डर कि ये बॉर्डर है और डॉग्स कैन नॉट क्रॉस इट। ऐसा नहीं ना है कि इफ अ डॉग वांट्स टू गो फ्रॉम लेट्स से गाजियाबाद टू दिल्ली, ही और शी नीड्स एनी परमिशन, इट्स नॉट लाइक दैट। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, है ना। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वाज नॉट दैट इजी व्हेन इट कम्स टू दैट जजमेंट, है ना। रिमूवल ऑफ डॉग्स व्हिच आर एफिशिएंट स्कैवेंजर्स वुड आल्सो लाइकली टू लेड टू एन एक्सक्लूजन इन द पॉपुलेशन ऑफ रोडेंट्स एटसेट्रा। हाँ, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर। फूड वेब एक चीज होती है, अगर कोई जैसे एनिमल से एक एनिमल, दो एनिमल, तीन एनिमल, लाइक दिस, अगर किसी का प्रेडेटर खत्म कर दिया जाए, इफ द प्रेडेटर इज रिमूव्ड, दिस पॉपुलेशन विल इंक्रीज फास्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स जो मान लीजिए रोडेंट्स को खा लेते हैं, मान लो फॉर किसी एनिमल को खा लेते हैं, जैसे ऐसे समझते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं कैट्स का। जैसे कैट्स क्या करती है, कैट्स जनरली ईट माउसेस, ठीक है। Imagine in the entire India, all the cats are removed. So mouses population will suddenly increase and it will create menace. So the nature has made a balance. ठीक है, तो जो डॉग्स को अगर आप इमीडिएटली वहां से हटा दोगे तो डॉग्स जिस चीज को खा लेते हैं वो वाली चीज इंक्रीज कर जाएगी। That is also the case. तो आप इसको हैंडल करने के लिए डू यू हैव द प्रॉब्लम? फॉर एग्जाम्पल जनरली क्या होता है, डॉग्स आर जनरली फाउंड वेयर, जहां पे कूड़ा होता है, तो बहुत सारे इन्फेक्शियस चीज है ना, जैसे मान लो कि हड्डी है या कुछ ऐसी चीज है, खा लेते हैं वो, दे ईट। सो दे आर ऑल्सो द रीजन फॉर रिड्यूसिंग वेस्टेज और रिड्यूसिंग एक्चुअली द गार्बेज और इन्फेक्शन, ठीक है, वो सबको ईट कर लेते हैं। तो क्या इफ वी आर एक्चुअली टेकिंग अप ऑल द डॉग्स, सो व्हाट अबाउट दोस थिंग्स, आर वी एबल टू हैंडल दैट? तो उसमें जो प्रॉब्लम्स ये थी कि बहुत सारे मतलब सडनली 8 वीक्स के अंदर इन 2 months solving taking up all the dogs and solving all the problem was I think not so easy, and that is what the author is saying, ठीक है। तो वही बता रहे, हालांकि at the same time there were issues where dogs actually bite people and of course that is also problematic, तो ये भी एक इशू है, both the issues are there, okay, that is what is being talked about, ठीक है। तो अपना उन्होंने एग्जांपल वगैरह दिए, स्ट्रीट डॉग इज अ केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड डाइवर्जन एटसेट्रा, ओके। देन उन्होंने बोला कि सॉल्यूशन क्या है, सो ही हैज गिवन द सॉल्यूशन ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल, कि नंबर्स रिड्यूस हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गए, ओके। सो वी कैन हैव अ लॉट ऑफ प्रोविजंस, हाउ टू डिक्लाइन इन अ हाई रेट ऑफ वैक्सीनेशन इज गिविंग एग्जांपल ऑफ जोधपुर डॉग पॉपुलेशन प्रोग्राम, ओके, स्टडी। तो ऐसा देखो यहाँ पे लिखा है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया over the years revealed story of insufficient budgets, unmet sterilization targets and a complete lack of accountability. The problem is not dogs, it is the dereliction of duty by MCD officials. तो वो बता ये रहे हैं कि डॉग्स प्रॉब्लम नहीं है, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी मतलब होता है प्रॉपर काम, अपना काम नहीं करना। सो MCD officials according to the author, they have not done their duty properly and that is why we are seeing so many dogs, the dogs multiplying so fast. We have to ensure that sterilization should be done so that the animal birth per control can be done effectively, okay. So that is what it is. So again the Supreme Court had passed a judgment and of course if maybe you, after all it should be implemented by the MCD, है ना, that's the case. तो बता रहे पुराना जजमेंट तो 2024 का, which was Justice J.K. Maheshwari's judgment and that actually was contradicting this judgment, ये बता रहे हैं, है ना।
So this the last 2024 judgment by Justice J.K. Maheshwari. He talked about animal birth control rules 2023, upheld the rules, and it said that, of course, which are rooted in science and compassion. So this rule is very important to be implemented to ensure control of animals population. And these are the things being talked about. ठीक है, फिर आर्टिकल 51A बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, राइट, imposes fundamental on every citizen to have compassion for living creatures, है ना. So living creatures includes animals also, है ना. That is what the author is talking about. ठीक है. So these are the things being talked. Now let's talk about the Chinese foreign minister was in India. What is his name? Please tell me. Recently. And Modi ji would be going to actually Wang Yi. She was in India. Chinese foreign minister Wang Yi 2-day visit to India this week was extremely productive. It was an invitation by NSA Ajit Doval for 24th special representative of talks, and he met Mrs. Jaishankar, etc. And Modi ji will be traveling to Tianjin for Shanghai Cooperation Organization meeting also. Okay. And they have agreed to resume border talks at 3 points, restart direct flights, expand Kailash Mansarovar, and relax visas. ठीक है, एक तो है कि फ्लाइट्स जो थी, फ्लाइट्स विल गो डायरेक्टली, है ना. एक तो ये हो गया. दूसरा है वीजा फ्री, वीजा इजी करो, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना. एंड द थर्ड वन इज ये मानसरोवर यात्रा जो है ना, मानसरोवर यात्रा. मानसरोवर इज अ प्लेस, so generally Indians go there. It's actually Mount Mansarovar, where actually there is a belief people from India go there. ठीक है, so that has been allowed. अब इसमें बहुत सारी डिबेट्स थी. लाइक फॉर एग्जांपल द डिबेट वाज, देखो यहाँ पे मिले थे इन दोनों, है ना, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर. द डिबेट वाज दिस. The debate was few days actually back on 4th July. I'm sure you must have heard that the Deputy Chief Army Chief had said that during Operation Sindoor, China was helping Pakistan. And in fact, he had talked about borrowed knife term. That there is a very famous quote from China that whenever you want to attack someone, use a borrowed knife. मतलब किसी और के कंधे पे गोली चलाओ, something like that, है ना. That's the idea behind this. So now, is it correct? Like 81% of military's hardware of Pakistan is from China. So he's saying that basically China was behind this also, the Operation Sindoor. That is what he said. Now, is it true that, is it okay that this he said in 4th July and almost 1.5 months later, we are now inviting Chinese foreign minister and improving the relation with these 3 points? So these are the things. These are the arguments. Whether some people will say no, it's fine. Some people will say no, it is not correct. So that is your opinion. Khair. Now, one more thing is Modi ji is going to China also for the SCO meet. So that is also the case, whether Modi ji should go or he should send his foreign minister. That's actually, let's just see. But abhi to aisa lag raha hai, apparently it appears that most likely Modi ji will go for SCO meeting. Tianjin is a place in China. Okay. Okay. Yes, these are the things being talked about. While there are positive discussion lifting of export restrictions by China on fertilizer, rare earth, and boring machinery, it is unclear whether there was a headway on China's demand. So basically, China had put restriction on rare earth metals are very much found in China. So of course we need it for electric vehicles, etc. Boring machinery are also required. Boring machine होता है ना जो अंडरग्राउंड मेट्रो वगैरह बनाने के लिए, है ना, या हाँ टनल्स बनाने के लिए होता है. The two sides agreed to expedite process of boundary resolution. Okay, इंडिया चाइना बाउंड्री के जो इश्यूज है उसको सॉल्व करने की बात हुई. These are the things being talked about, है ना. Chinese ambassador said that China opposes US bully move of imposing 50% tariff. Now, the Chinese ambassador actually supported India that USA should not be imposing this tariff. Okay. And we had, like, I'm sure he's talking about Galwan Valley clash also. I'm sure you must be aware. This is actually, we had seen Galwan Valley. Galwan River is there. So Galwan Valley clash happened in June 2020. Okay. And we had seen question in CLAT also 2021 based on this. ठीक है, तो ये सब बात हुई. ठीक है, उसके बाद said the borders have been quiet. Mr. Doval has said कि अभी border quiet है ना, है ना. And Mr. Wang
later on left for Kabul to work with Pakistan and Taliban on a plan to extend BRI and CPEC. ये इंडिया के लिए, इंडिया is opposed to both. ये इंडिया के लिए bad news है एक तरह से, मतलब positive news नहीं है. Why? So Wang Yi came to India. Wang Yi इंडिया आए, बातचीत किया और चले गए अफगानिस्तान. And when he went to Afghanistan, what he did is not liked by India. What is that? CPEC. I'm sure you must be aware. China Pakistan Economic Corridor, which connects Kashgar in China with Gwadar in Pakistan, and here you can go, right? Why is India opposing this CPEC? Please tell me. पता होना चाहिए. You should be knowing. I have discussed, taught many times. आप जाके YouTube पे सर्च कीजिएगा, Belt and Road Initiative Career Launcher. Please search this on YouTube. Yes, because it is passing through POK, which we believe that it is our own territorial integrity. Right. Nirali Mehta, you're right. And Sneha Swarup, right. Huh. So basically, that is why India has protested also. This is the reason why we have not joined Belt and Road Initiative. A problem is that Wang Yi came to India. And then after he went to Afghanistan, and he's saying we will be connecting CPEC with Afghanistan. Again, it is problematic for us. Because once you have made CPEC, I mean, you have decided to make, which is, of course, a violation of our territorial integrity. Second, after visiting India, you are going to Afghanistan to actually extend CPEC. क्या वहां जाके और CPEC को extend कर रहे हो? Okay, so of course it was, I would say, slightly embarrassing for us कि नहीं होना चाहिए, ideally. India is opposed to both into Afghanistan. He then flew to Islamabad for a strategic dialogue with Pakistan. उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए. He left for Kabul, then to Islamabad. So actually, from Delhi, he went to Afghanistan, then back to Islamabad, like this. So of course, it is slightly, of course, not very good for us. China's diplomatic support to Pakistan after Pahalgam attack and Operation Sindoor did not come up during Wang's visit, but provided an ominous overhang. तो ये सब बात, लेकिन बात सच्चाई यही कि which our deputy army chief has said, it means there must be some substance. Because of course he has got all the information. उनको सारी information मालूम होगी, तभी उन्होंने कहा होगा कि चाइना ने पाकिस्तान को openly support किया था during Operation Sindoor. So that is what the issue is. Okay, खैर चलो देखते हैं अब क्या होता आगे. Let us see. Now here's an article said the guardrails for AI use in courtrooms. Now ये भी काफी interesting है, and when I was reading it, I was also surprised. So basically, ये आपने देखा होगा, recently Kerala High Court has come up with some guidelines regarding use of AI by district judiciary. How many of you have seen this? Kerala High Court ने एक order pass, मतलब एक तरह से guideline लाया कि district जो lower judiciary यानी subordinate district judiciary है, वो actually AI को कैसे properly use करे, ठीक है, थोड़ा सा regulate भी किया, in the sense it has to be regulated. मतलब ऐसा नहीं कि हर कुछ AI से ही पूछ रहे हैं, अपना मतलब दिमाग भी लगाना है. That's the idea, है ना? So the problematic thing with AI is it is not perfect. कोई भी AI tool, chat GPT, Gemini, even I myself have used it, and not all of them are actually perfect. Even GK और current affairs के लिए तो मत ही use कीजिए, especially current affairs के लिए, because they are not very much up to date, and of course they give sometimes wrong answers also. देखो machine में और human being में फर्क होता है, still there is a difference. For example, I'll tell you, there is a concept called as leave of the court, leave granted. जैसे पार्लियामेंट में ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, लीव ऑफ द हाउस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीव ऑफ द हाउस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट? कोई बता सकता है? एनीवन? लीव ऑफ द हाउस सुना है किसी ने पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में? एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पांस. बताइए. लीव का मतलब यहाँ पे परमिशन के सेंस में होता है, ठीक है, स्पेशल लीव पिटीशन. लेकिन जब एआई को दिया गया कि लीव, सुप्रीम कोर्ट इंडिया जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज रिपोर्टेड ट्रांसलेशन ऑफ लीव ग्रांटेड इनटू छुट्टी स्वीकार इन हिंदी. तो ट्रांसलेशन में एआई को दिया गया, तो इंग्लिश में जज ने लिखा, जज साहब ने लिखा लीव ग्रांटेड, मतलब एक तरह से परमिशन ग्रांटेड के सेंस में, और हिंदी में उसको उसने ट्रांसलेट कर दिया एआई ने, छुट्टी स्वीकार.
जबकि यहाँ पर वो लीव का मतलब नहीं था. ओके, सो हेयर लीव वाज नॉट टॉकिंग अबाउट हॉलीडे, हेयर लीव वाज एक्चुअली रिलेटेड विद अ सॉर्ट ऑफ अ परमिशन. ठीक है, तो जैसे स्पेशल लीव परमिशन, तो यहाँ पर लीव का मतलब हॉलीडे थोड़ी होता है, छुट्टी थोड़ी होता है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. So basically, that is what I mean. The author has given one example, but there are a lot of scope where AI does a lot of mistakes. Okay, that is why it is very important. So large language model कहते हैं इसको, chat GPT and other AI tools. Of course, we cannot be completely dependent on that. ठीक है, इसलिए केरला हाई कोर्ट ने, of course, they have come up with some regulation regarding AI. मतलब ऐसा नहीं हो कि जज साहब जो है वो सारा डॉक्यूमेंट्स को chat GPT में दे दिया और पूछ रहे हैं should I give bail or not. मतलब मान लीजिए जज साहब के पास दोनों तरफ की हियरिंग आई, दोनों डॉक्यूमेंट आए, दोनों डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बना करके चैट जीपीटी में डाल दिया. प्लीज टेल चैट जीपीटी आई हैव लिसन्ड टू बोथ ऑफ माय आर्गुमेंट्स, बोथ द आर्गुमेंट्स आर हियर, आई एम अपलोडिंग इट इन पीडीएफ फॉर्मेट, रीड इट एंड टेल मी वेदर आई शुड गिव बेल और नॉट. तो चैट जीपीटी बता देगा कि हाँ इस केस में आप दीजिए, नहीं दीजिए, जो भी. बट शुड द जज बी यूजिंग चैट जीपीटी फॉर गिविंग बेल? नो. हाँ बता देगा, हो सकता है चैट जीपीटी कुछ आंसर कर दे, बट इसलिए चैट जीपीटी नहीं यूज करना चाहिए कि भाई आप जज बने हो, आपने लॉ पढ़ी है, पूरा एग्जाम पास किया, एवरीथिंग, यू विल डिसाइड ना, दैट द यू हैव बीन गिवन दिस पावर टू डिसाइड. आप चैट जीपीटी को दे दी, चैट जीपीटी आंसर बता दिया, आप वही आप कर लिए. सो दैट शुड नॉट हैपन, राइट? दैट्स व्हाई रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड नॉट बी टू मच डिपेंडेंट ऑन एआई. एआई इज अ वेरी गुड थिंग, वी शुड यूज इट, बट नॉट ओवर डिपेंडेंट. इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो जाए कि आंख बंद करके उन्हीं पर भरोसा करने लगे, है ना. दैट्स व्हाट द आइडिया इज. मतलब लोग बोलते हैं हाँ एआई से बहुत सारा फायदा हो जाएगा, जितने सारे पेंडिंग केसेस सॉल्व हो जाएंगे, अग्रीड, लेकिन उसका भी एक लिमिट है. आफ्टर ऑल ह्यूमंस आर द जजेस. जज ह्यूमंस, इंसान होते हैं, और वही डिसाइड करेंगे फाइनली. नहीं तो फ्यूचर में सारे जजेस की जगह एआई बैठा दिया जाएगा, वही डिसाइड कर लेगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना. बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो इंसान समझ सकते हैं और चैट नहीं. फॉर एग्जाम्पल इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशन. किसी का जो तकलीफ है, पेन है, वो एआई नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर जज होगा, वो हियर कर रहा मैटर, तो समझ जाएगा उस इंसान की तकलीफ, है ना. तो जज उसी हिसाब से फिर जजमेंट सुनाएगा, है ना. लेकिन जो मशीन होगा वो शायद नहीं समझ पाए, या चैट जीपीटी या एआई. यस, दैट इज व्हाट द आइडिया इज. और भी बहुत सारी चीजें जो ऑफ कोर्स मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड. तो इसमें बहुत सारी चीज उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, अब इतना डिटेल नहीं जाना है. ओके, एआई आजकल काफी न्यूज में, सो इफ पॉसिबल आई विल हैव अ सेपरेट क्लास फॉर एआई. लेकिन बहुत सारी चीज ई कोर्स के माध्यम से हो सकता है. फॉर एग्जांपल, बहुत सारे पिटिशंस फाइल किए गए और सिमिलर नेचर के, सो आई विल गिव इट टू द चैट जीपीटी. चैट जीपीटी को कहूंगा कि आप सारे जो सिमिलर केसेस हैं उसको एक जगह बता दो. सो चैट जीपीटी विल से ओके दीस आर द 10 केसेस ऑफ सिमिलर नेचर, तो उसको एक साथ में डिसाइड कर लूंगा लाइक दिस. और सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ इज देयर. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ठीक है. तो बहुत जगह पे यही यूज किया भी जा सकता है. और आई कैन आस्क चैट जीपीटी इज देयर एनी प्रीवियस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग इट, रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर केस. हो सकता है चैट जीपीटी निकाल के बता दे कि देखो पुराना ये केस है, आप पढ़ लो जाके. सो इन दैट केस चैट जीपीटी कैन बी हेल्पफुल, ठीक है. सो बोथ द थिंग्स आर देयर, ठीक है. बट ऑफ कोर्स वी कैन नॉट बी कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन दिस, ठीक है. इसको छोड़ देते हैं, अभी इसका इंपॉर्टेंट नहीं. लेट्स टॉक अबाउट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. ये वाला जानते हैं, फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल्स नॉट सेटल्ड सेज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट काउंसिल. तो ग्रेट निकोबार है ना, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है ग्रेट निकोबार. ओके, सो होता ये है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आर देयर, कहीं पे लिखा होगा 2006, and under this act scheduled tribes and tribal communities are given some habitat rights. So Great Nicobar Island की जो काउंसिल है, निकोबारीज, they had sent a representation to Union Minister of Tribal Affairs कि our actually we are Forest Rights Act, forest rights, है ना. Andaman Nicobar Administration made a false representation to the center claiming that rights of the tribal people under forest rights had been identified and settled. तो वो लोग ये कह रहे हैं कि अंडमान निकोबार की जो आइलैंड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने गलत बात कह दी सेंटर को. दैट इज व्हाट ग्रेट निकोबारी आइलैंड काउंसिल सेड. वो लोकल पीपल का काउंसिल होगा, उन लोगों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत मैसेज दे दिया कि हमारे राइट्स मिले हैं, वी हैव नॉट गॉट द राइट्स. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट.
तो यहाँ पे एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है, उसका नाम क्या है बताइए तो, वी हैड डिस्कस्ड वेरी फेमस। एक तो यहाँ पे विजियांजम बना है ना, विजियांजम इन केरला। एक यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है, व्हाट इज दैट पोर्ट, प्लीज टेल मी द नेम। गैलेथिया बे, पढ़िएगा इसको प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इन निकोबार रीजन, ग्रेट निकोबार। ओके ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो। सो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंदर हैबिटेट राइट्स आर गिवन टू ट्राइबल कम्युनिटीज, इतना आप समझ लो, दैट इज मोर देन इनफ। मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूं, है ना। ना एक चीज और हुआ था, लीपू लेक, अगेन नेपाल इज क्लेमिंग, इस पर क्लैट 2020 में क्वेश्चन भी आया था, एट दैट टाइम इट वाज देयर इन द न्यूज। तो नेपाल हैड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिजेक्ट्स नेपाल्स क्लेम ओवर लीपू लेक। सो यहाँ पर ये उत्तराखंड है, ये वाला लीपू लेक पास इज देयर, और इस पास से यहाँ पे पास है, ठीक है। सो जैसे न्यू दिल्ली से लोग मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी जाते, तो यहाँ पे ठीक है लीपू लेक, एंड नेपाल इज क्लेमिंग कि मेरा हिस्सा है, लाइक दिस। ये है लीपू लेक पार्क पास, ओके। नेपाल ये क्लेम करता है कि जो महाकाली ट्रीटी हुई थी, इन दैट डिटेल। सो ये काली ट्रीटी, काली रिवर है, इट वाज बिलीव कि दिस इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो नेपाल कहते हैं कि नहीं ये वाली रिवर है, सो दिस पार्ट इज माई पार्ट, बट नो वी से कि नो दिस इज द रियल काली रिवर, so this is our part, okay। So Nepal sometimes claims that this is my part or something like that, so of course this is currently controlled by India, of course this is our part, no doubt, but ये लिम्पायदुरा लीपू लेक काला पानी कई बार न्यूज में रहता है, so just have an idea about that, okay, है ना। तो I think we are ending this class, है ना। एक वर्ल्ड पेज में न्यूज था, UN declares famine in Gaza, blames Israel for systematic aid obstruction। We have discussed the class, you search Israel Palestine conflict career launcher, you will get the video, okay। So this is all about today's class. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day.